हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनोकुलर। आज अपन लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सीरीज की 14th यूनिट देखेंगे, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड क्लोटिंग ये डिटेल में देखेंगे। एंड आई होप इस लेक्चर के बाद आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। In human circulatory system, there are three main parts. That is heart, its vessels, blood and blood circulation. If we say general information, human heart has four chambers. Humans have four-chambered heart. Human heart is present between both the lungs and the heart is slightly tilted toward the left side. It is a muscular organ and pump blood all over the body. It is the size of an clenched fist. Now we will see in detail the heart, the circulation of blood all over the body, and the main component, which is blood. Now let's see the structure of an heart. So human heart has basically four chambers. Upper chambers are called atrium and lower chambers are called ventricles. Upper chambers are right atrium, left atrium, and lower chambers are right ventricle, left ventricle. Then there are valves present in human heart. Valves are present in heart to prevent the backward flow of the blood. That means the blood flow in single direction from right atrium to right ventricle and from left atrium to left ventricle and through aorta all over the blood. If we say about valves, tricuspid valve is present between right atrium and right ventricle, and bicuspid or mitral valve is present between left atrium and left ventricles. Along with blood vessels are also present, which include arteries, veins and capillaries. Arteries always carry oxygenated blood except pulmonary artery, and veins always carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Here we can see the structure of an heart, where we can clearly see the four chambers, right atrium, right ventricle, which are separated by tricuspid valve, left atrium and left ventricle, which are separated by bicuspid or mitral valve. Blood comes from body through superior vena cava or inferior vena cava, which is deoxygenated blood, to right atrium. Through bicuspid valve it goes to right ventricle, and from right ventricle to pulmonary artery, and from pulmonary artery to lungs. Oxygenated blood comes from lungs through pulmonary vein to left atrium, and from left atrium it goes to left ventricle through bicuspid valve, and through aorta it is transported all over the body. So this is in structure of an human heart with all its chambers and all its valve. Now we will see how the blood circulate all over the body. In mammalian heart, double circulation is present. It means blood flow twice from the heart. First is pulmonary circulation and another is systemic circulation. Pulmonary circulation occurs in the right side of the heart, where deoxygenated blood from the body enters into the right atrium. From right atrium it enters to right ventricle through tricuspid valve, and from right ventricle it goes to the lungs through pulmonary artery. In lungs there is an exchange of gases occurs, where lungs put oxygen into the blood, and now the deoxygenated blood is converted into oxygenated blood. Oxygen binds to hemoglobin present in the blood, and this oxygenated blood is transferred to the heart through systemic circulation. Systemic circulation present on the right side of the heart, where oxygenated blood from lungs enter into the left auricle. Through left auricle it goes to left ventricle through bicuspid valve, and through left ventricle through aorta it goes to all over the body parts, and oxygen is distributed through blood.
Here we can clearly see that blue color shows deoxygenated blood where red color shows oxygenated blood. From body organs, deoxygenated blood through vena cava comes to right auricle. From right auricle, it comes to right ventricle through tricuspid wall, and from right ventricle, it goes to the lungs through pulmonary artery where there is an exchange of gases occur and deoxygenated blood convert into oxygenated blood. Now this oxygenated blood through pulmonary vein enters into left auricle and to left auricle to left ventricle through bicuspid wall, and from left ventricle through aorta it again goes to the body organ where the oxygenated blood having oxygen in it supply oxygen to all over the body organs. All the organs present in the blood receive oxygenated blood where the oxygen from the blood is transported to the body organs, and this oxygen which comes through blood is used for the various metabolic processes mainly involve respiration or breakdown of food and release of energy. Now we will see the component which is being transported all over the blood through this heart between lungs and body part, and that is blood. Blood is called fluid connective tissue. It is made up of liquid plasma and its formed element, or we can call them corpuscles. Plasma is almost 55% of the blood, which includes amino acids, nitrogenous waste, nutrients, electrolytes, proteins, gases. Main proteins of blood plasma are albumin, fibrinogen and globulin. Albumin maintain the osmolarity of blood, globulin help in defense mechanism, and fibrinogen helps in blood clotting. Formed elements or blood cells includes erythrocytes, leukocytes and platelets. Erythrocytes are called RBCs, leukocytes are WBCs, and platelets are blood clotting factors or formed elements. WBCs are further divided into granulocytes and agranulocytes, where granulocytes are further divided into neutrophils, neutral WBC, basophils, basic WBC, and eosinophils, acidic WBC. And agranulocytes are divided into lymphocytes and monocytes. Lymphocytes are T and B lymphocytes. Now we will learn about blood groups. तो अपन ABO ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे. तो सबसे पहले व्हाट इज द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. तो द ABO system classify human blood based on presence or absence of A or B antigen on red blood cell. तो it is a type of classification of blood. किसी का ब्लड ग्रुप A होता है, किसी का AB होता है, किसी का B होता है, किसी का O होता है. तो इसमें दो फैक्टर आते हैं, एक तो एंटीजन, सेकंड इज एंटीबॉडी. तो एंटीजन्स आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो कि आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटीजन ही ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी का जनरेशन करते हैं. मतलब एंटीजन, एंटीबॉडी जनरेटर्स. तो देयर आर स्पेसिफिक एंटीजन्स प्रेजेंट और उनके साथ कंपेटिबल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है. और ये जब कंपेटिबल होती है, मतलब एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है. मेन ब्लड ग्रुप है ए, बी, ए बी और ओ. डिस्कवरी इनकी की थी कार्ल लेंस्टर ने. नाउ ब्लड ग्रुप देखें तो जैसे अपन इस चार्ट में देख सकते हैं, ए बी ओ ये ब्लड ग्रुप्स हैं. रेड ब्लड सेल टाइप दे रखा है. देन एंटीजन, तो ए ब्लड ग्रुप के लिए ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, और ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है. एंड इनके सामने एंटीबॉडीज, तो ए एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, बी एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और ए बी एंटीजन के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट होती है. तो इस तरीके से इनके बीच में कंपैटिबिलिटी होती है. अगर कोई मिसमैच होता है तो क्लम्पिंग हो जाती है, जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है और उसको रिजेक्ट कर देता है. अब ओ नेगेटिव इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर.
ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो इन सब में से किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। एंड ए बी पॉजिटिव है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप इन चारों ब्लड ग्रुप में से कोई भी ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है। बाकी ए ब्लड ग्रुप ए को ही दे सकता है और ओ को ही दे सकता है, बी और ओ को दे सकता है, ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है, ओ सबको दे सकता है। एंड रिसीवर में भी सेम है कि ए और ओ से रिसीव कर सकता है, बी और ओ से, ए बी से, ए बी सबसे रिसीव कर सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इनका इनहेरिटेंस पैटर्न देखें कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग है उसमें ब्लड ग्रुप कैसे ट्रांसफर होता है। तो ब्लड ग्रुप के लिए मल्टीपल एलील्स होते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है उसमें मोर देन 2 एलील्स होते हैं, जिसके स्पेसिफिकली IA, IB और IO, जिसको स्मॉल आई से डिनोट किया हुआ है, ये 3 एलील है, जिसमें IA एंड IB डोमिनेंट एलील है, वाइल स्मॉल आई और IO रिसेसिव है। जब IA दोनों एलील प्रेजेंट होते हैं, या फिर IA और IO या स्मॉल आई प्रेजेंट होता है तो ब्लड ग्रुप A होता है। सेम दोनों B और एक B भी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप B होता है। ब्लड ग्रुप AB के लिए दोनों एलील A और B एलील साथ में प्रेजेंट होने चाहिए, और ब्लड ग्रुप O के लिए दोनों रिसेसिव एलील होने चाहिए। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस पैटर्न है। ये ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई होते हैं कि किस एंटीजन के साथ कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और कौन सा यूनिवर्सल डोनर है। इंपॉर्टेंस में डेली लाइफ में है कि एसेंशियल सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब किसी पर्सन टू पर्सन अगर अपन को ब्लड देना है तो ब्लड ग्रुप का कंपैटिबल होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है, दूसरे ब्लड ग्रुप में नहीं दे सकते। क्रूशियल फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी ब्लड ग्रुप का सेम होना या फिर कंपैटिबल होना जरूरी है। अगर वो मिसमैच हो जाता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, पैटर्निटी टेस्ट, these are some importances. Now we will learn about blood clotting mechanism, कि कभी कोई इंजरी हो जाती है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जो क्लॉट बनता है वो कैसे बनता है। तो जब इंजरी होती है तो एक्टिवेशन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का, फिर कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट करता है। एंड जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए मेन जो फैक्टर है वो है प्लेटलेट्स। सबसे पहले इंजरी हुई, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हुआ। ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन, जो एक स्पेसिफिक केमिकल होता है ब्लड में, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। नाउ दिस थ्रोम्बिन इज इन टर्न कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस फाइब्रिन का एक मैश बनता है जिसमें जाके जो डेड पार्टिकल्स और प्लेटलेट्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं और क्लॉट बनता है। सो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। इसमें मेनली जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जैसे कैल्शियम है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, एंड अदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग, then blood group, type of blood,